यो अगाडिको कुर्सी हामीले केही निकाल्नु पर्ने भयो भोलन्टियर साथीहरु यो बैक साइड को कुर्सीहरु ल्याएर प्रीति प्रभा जो बिहार से आई है आप स्टेज के बगल पे प्लीज आइए media corner established in front tent. So if you want to work from there, you are welcome. There is a working space. There's Wi-Fi and other working facilities has been provided. So please can contact our media center which is in front of the gate. आदरणीय साथीहरु हाम्रो र्याली आउँदैछ सबै र्यालीको साथीहरुलाई बीचमा व्यवस्थित गर्दिन हुनको लागि अनुरोध गर्छौं र सबले एकचोटी ताली पड्काउँ त मजा वाउ अर्को विश्व कहिले अहिले अर्को विश्व साथीहरु एकचोटी जोरदार कृपया साथीहरु अगाडि बढिदिन हुन अनुरोध गर्दछु अनुरोध गरे मैले पूंजीवाद मुर्दाबाद समाजवाद जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद विश्व एकता जिंदाबाद नागरिक एकता जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद लड़ेंगे 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 इंकलाब जिंदाबाद अर्को विश्व संभव छ दूसरी दुनिया संभव है
मञ्चमा वक्ता साथीहरू बाहेक अरू मञ्चबाट बाहिर गइदिनु होला। वक्ता र स्वयंसेवक साथीहरू बाहेक अरू बाहिर गइदिनु होला। हाम्रो ट्रान्सलेटर हुनुहुन्छ, साइन ल्याङ्ग्वेजको सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहेक अरू मञ्चबाट बाहिर जाइदिनु होला। अब हामी केही छिनमा सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। स्वयंसेवक meetings and then all preparatory activities. Now with all this, we are ready to start. So let's congratulate ourselves, let's congratulate each one and say that yes, we did it. म डाक्टर रेणु अधिकारी राजभण्डारी, म विश्व सामाजिक मञ्च नेपालको आयोजक कमिटीको एउटा सदस्य हो, एउटा महिला अधिकार कर्मी हो र त्यसका साथसाथै हामी यहाँ सबै विश्व सामाजिक मञ्चका सबैजना नै हामी सदस्यहरू यहाँ छौँ, भोलिन्टियरहरू यहाँ छौँ। सबैलाई एकचोटि फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, आफैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि एकपटक धन्यवाद। Yes, we are here, all the NOC members. I am one of the members. I'm Renu Adhikari Rajbandari from NOC, and then we all NOC members are here, volunteers are here. So we let's congratulate each other and let's say thank you. यो 16औं संस्करण हो। यहाँनेरि हामी 2001 मा ब्राजिलबाट सुरु भएको विश्व सामाजिक मञ्च, जुन विश्व आर्थिक मञ्च, जुन पुँजीवादी राष्ट्रहरूले विश्व आर्थिक मञ्च भनेर सुरुवात गरे, त्यो विश्व आर्थिक मञ्चले गरिबलाई, पाखा पारिएको लागि, नागरिकको लागि, महिलाको लागि, जनजातिको लागि, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि, सुकुम्बासीको लागि, परिवर्तनको मलाई विश्वास गर्ने मान्छेको लागि, पर्यावरणका लागि, सबै थोकका लागि भनेपछि जीवनका लागि विश्व यो पुँजीवादी संसारले सुरु गरेको विश्व आर्थिक मञ्च हाम्रो लागि काम लाग्दैन भनेर अभियन्ताहरूले विश्व सामाजिक मञ्च 2001 मा सुरु गरेका हुन्। ब्राजिलबाट सुरु भएको विश्व सामाजिक मञ्च 16औं संस्करणको रूपमा नेपालको काठमाडौँमा आइपुगेको छ। हामीसँग आज विश्व सामाजिक मञ्चमा 10 जना वक्ताहरूको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी सबैजनाले बच्चादेखि नै मेरो कुरा गर्छु, एक खालले रोमान्टिसाइज गर्दै वास्तवमा we are gathered here at the juncture of that stage of the world when in Palestine genocide is taking place, where right-wing politics are coming everywhere under the name of localization of globalization is taking place. Neoliberals are getting more and more stronger. At this point of time, we need to be more united, our solidarity needs to be strengthened. That's why we are here, we are together. So with this, I would like to start the program, today's program. So first of all, I would like to ask Mr. Lakshman Basnet, who is a tireless trade union activist, who has been actively working for the rights of workers as a trade unionist for the last 33 years. He pioneered to introduce social protection from workers' perspective in Nepal. He says that it took over 24 years of persistent effort to make the government realize the need of social security and bring that into the practice to preside the event. लक्ष्मण बस्नेत दाइलाई जो सार्टुकको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो 33 वर्षदेखि ट्रेड युनियनको अधिकारमा, ट्रेड युनियन राइट एक्टिभिस्टको आधारले वर्करहरूको अधिकारको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो नेपालमा श्रमिकहरूको तर्फबाट जुन एउटा सोशल प्रोटेक्सन, सामाजिक सुरक्षाको कुराको लागि लिड गर्नुभयो र जसले उहाँको भनाइमा 24 वर्ष लाग्यो हामीलाई सरकारलाई यो कुरा रियलाइज गराउन
बढाउनको लागि भनेर भन्ने उहाँलाई आजको हाम्रो यो उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिदिनु हुन लक्ष्मण दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। लेट्स गिभ बिग ह्यान्ड टु लक्ष्मण दाई। हे वर्कर्स राइट्स आर ह्युमन राइट। अब म आजको कार्यक्रमको सुरुवात हामीसँग एउटा स्वागत गीतबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो स्वागत गीत 6वटा भाषामा जोडिएको छ। फुलका गुच्छा जस्तै थुङ्गा थुङ्गा गरेर जोडिएको छ। यो थुङ्गा थुङ्गा जोड्ने प्रयास गर्नुभएको, यो गीत लेख्नु भएको, यो गीतलाई बाजामा आबद्ध गर्नुभएको हाम्रो माधव प्रधानजीले हो भने यो गीतलाई आज यहाँ कलाकारको रूपमा आइराख्नु भएको छ मीना स्वर्णकार, बुद्ध घरती, आकाश थापा, जितेन्द्र चौधरी, रानु थापा, निशा लिम्बू, सरिता थुलुङ र सागर नेपाल। Now, actually, I would like to request our cultural team to start the welcome song, which has been composed and by composer and lyricist Mr. Madhav Pradhan. And this welcome song is in a kind of, they have tried to pull 6 languages together. And then the artists who are performing are Meena Swarnakar, Buddha Gharti, Akash Thapa, Jitendra Chaudhary, Ranu Thapa, Nisa Limbu, Sarita Thulung, and Sagar Nepal. Let's welcome the team with the welcome song. Everybody. Hello. Hi, Jay. Hi. स्वागतम नेपालमा स्वागतम विश्व सामाजिक मञ्चमा सबैलाई स्वागतम विश्व सामाजिक मञ्चमा सबैलाई स्वागतम वेलकम टु सोशल फोरम वेलकम टु आपका स्वागत है। Bienvenido a Nepal, bienvenido a Nepal, bienvenido a Nepal. Bienvenida para o Nepal, bienvenida para o Nepal. Bienvenido Nepal, bienvenido Nepal. अर्को विश्व सम्भव छ। अर्को विश्व सम्भव छ, अर्को विश्व सम्भव छ, सम्भव छ, सम्भव छ, सम्भव छ। I know the world is possible, I know the world is possible, 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 possible. दूसरी दुनिया संभव है, दूसरी दुनिया संभव है, संभव है, संभव है। Possible, 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 possible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible, 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 posible. We shall overcome.
shall overcome one day. हम होंगे कामयाब. And another world is possible. Definitely another world is possible. That's why we are here. So now I would like to request Dr. Netra Timsina, who is one member of National Organizing Committee in Nepal. He will be welcoming all of us to with a welcome message from Dr. Netra Timsina on behalf of National Organizing Team. Now floor is yours, Dr. Netra. धन्यवाद डाक्टर रेणुराज अधिकारी. विश्व सामाजिक मंच को 16औं संस्करण 2024 उद्घाटन कार्यक्रम का अध्यक्ष आदरणीय दाई लक्ष्मण बस्नेतज्यू, उद्घाटन कार्यक्रम का विभिन्न महादेशहरूबाट र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका आदरणीय सामाजिक अभियन्ता मित्रहरू, उहाँहरू यहाँ यो डासमा सबै महादेशबाट, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोप, अमेरिका, एसिया, ओसिनिया र सबै आन्दोलनहरूबाट, मजदुर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, महिला आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र सबै खालका दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू र सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ सबै समुदायहरूबाट, सबै महादेशहरूबाट, 92 देशहरूबाट यहाँ उपस्थित वक्ताहरू पनि प्रतिनिधिमूलक हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई म यहाँ हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु. यो आजको कार्यक्रम हाइब्रिड भनेको यो विद्युतीय माध्यमबाट पनि संसारभरि थुप्रै लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले हेरिरहनु भएको छ. उहाँहरूलाई पनि यो विश्व सामाजिक मञ्च 2024 मा म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु. विश्व सामाजिक मञ्च नवउदारवादी व्यवस्थाले पारेको नकारात्मक प्रभावका विकल्पहरू खोज्न, विचार आदान प्रदान गर्ने, वर्तमान असमान प्रणालीहरूलाई बदल्न, सामाजिक आन्दोलनहरू बीच सहकार्य गर्ने रणनीतिहरूमा छलफल गर्ने, अर्को विश्व सम्भव छ या सामाजिक न्याय, समानता, सहअस्तित्व र मानव मर्यादा सहितको नयाँ विश्व सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नेहरूको एउटा साझा थल हो. त्यसैले हामी यहाँ 92 वटा देशहरूबाट उपस्थित भइरहेका छौँ र आज सिङ्गो मानव जाति र पृथ्वीले बहुआयामिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ. जलवायु सङ्कट, भोकमरी, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिसँगै विश्वव्यापी रूपमा गरिबी, असमानता, विभेद, हिंसा, युद्ध र नरसंहारले संसारका 90% मानिसहरू सङ्कटपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्. विश्वव्यापी रूपमा देखिएका यी जोखिमहरू आजको समयका वास्तविक जोखिमहरू हुन्. पुँजीवाद, विश्वव्यापीकरण, नवउदारवादी व्यवस्थाले ल्याएका यिनै सङ्कटहरूको बारेमा विश्व सामाजिक मञ्च 2024 मा छलफल हुनेछन् र अर्को अथवा न्यायपूर्ण विश्व कसरी सम्भव छ भन्ने विचार अनुभवहरू आदान प्रदान हुनेछन्. विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू जस्तै मजदुर, किसान, महिला, युवा, अपाङ्गता भएका समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू, हिंसा तथा युद्ध पीडित, यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो प्यालेस्टाइन साथीहरूको पनि आज ठुलो ब्यानर सहित सडकमा उहाँहरूको जुलुस थियो. सीमान्तकृत समुदायहरूले आफ्नो घोषणा गर्नेछन् र कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्नेछन्. विश्व सामाजिक मञ्चको भूमिकाबारे वक्ता मित्रहरूले चर्चा गर्नु नै हुनेछ. म टाढा टाढादेखि आउनुहुने हवाईजहाजमा 3 दिन लगातार यात्रा गरेर आइपुग्नुहुने र भारतको दक्षिण क्षेत्रबाट 3 दिनसम्म मोटर गाडीमा, 4 दिनसम्म मोटर गाडीबाट आउनुहुने सबै साथीहरू, ल्याटिन अमेरिकादेखि लिएर यहाँ हाम्रो दक्षिण एसियाका सबै साथीहरूलाई म पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु. र तपाईँहरूको जो विदेशी साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरूको नेपाल बसाई सुखद रहोस्. तपाईँहरूले नेपाली समाज, नेपाली भूगोल, संस्कृति र सम्पदाको बारेमा बुझ्ने मौका मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ. म अन्त्यमा नेपालमा भएका मानवाधिकार र लोकतन्त्रका लागि भएका सङ्घर्षहरू, हाम्रो यो वर्ल्ड सोसल फोरमको एउटा स्ट्रगल एन्ड रेसिस्टेन्स एन्ड स्ट्रगल भन्ने भयङ्कर ठुलो एउटा हाम्रो स्लोगन छ. यी सङ्घर्षहरू नेपालमा थुप्रै स्ट्रगल र रेसिस्टेन्सहरू भएका थिए. ती सामाजिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू, लोकतन्त्र र मानवाधिकार, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका बारेमा पनि यहाँहरूले बुझ्ने
संवाद गर्ने समय पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हामी सबैको लागि अबका 5 दिनहरू अत्यन्त उपयोगी बन्नेछन् भन्ने आयोजक समितिको हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। यो कार्यक्रमलाई विगत 1 वर्षदेखि अत्यन्त सक्रियताका साथ स्वयंसेवी रूपमा खट्नुभएका केही नामहरू पढेर म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्यो भनेको म नाम मात्रै पनि रामप्रसाद सुवेदी, नरेन्द्र खतिवडा, सुशील विके, गणेश धामी, किरण थापा, अभिषेक श्रेष्ठ, बेनुमाया गुरुङ, ओम तपलिया, बेदोर सुवेदी, जगदीश भट्टराई, दीपक सोनी, हुकुम पोखरेल, जेबी विश्वकर्मा, नरेन्द्र पासवान, ध्रुवदेव, सुलोचना खनाल, अर्जुन भट्टराई, भगवती अधिकारी, जगत बस्नेत, प्रदीप लामिछाने, उषा तितेक्सु, उद्धव पाकुरेल र सचिवालयका लगायत मैले केही नामहरू छुटाएर अत्यन्त सचिवालयमा हाम्रा सचिवालयका साथीहरूलाई हामी अन्तिम दिनमा धेरै धन्यवाद नै दिनेछौँ। त्यहाँ 9-10 जनाको एउटा युवाहरूको टिम छ। उहाँहरूले आज यो कार्यक्रम यति धेरै सफल पार्नमा सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूको नाम यहाँ लिएर भने अरू पनि थुप्रै हजारौँ साथीहरू यसमा खट्नुभएको छ अधिराज्यभरिले। त्यसमा न्याय हुने छैन। मैले यति भनेर फेरि पनि यो हाम्रा 5 दिनहरू उपयोगी बनुन् र तपाईहरु नेपालमा धेरै स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी कहाँ आज पहिलो वक्ताको रूपमा ताला नसिर हुनुहुन्छ। उहाँ मानवाधिकार वकिल हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ आदमीर फर प्रिजनर सपोर्ट एन्ड ह्युमन राइट एसोसिएसनमा काम गर्नुहुन्छ। वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 नेपाल अर्गनाइजिङ कमिटी along with all associated with World Social Forum, I stand in solidarity with Palestinian people in their struggle for justice. And as a solidarity, our Tala Nasir, who is from Palestine, she's a human rights lawyer and advocate who is working at Adamir for Prisoner Support and Human Rights Association. I would like Tala to come over and then deliver her message. Tala, floor is yours. Good evening, everyone. I am Tala from Palestine. As I stand here today, while the most heinous genocide in modern times is being committed against the Palestinian people in the Gaza Strip from the Israeli occupation, I stand before you today as the Israeli colonial occupation perpetrates terrible war crimes against children, women, and elderly. Today, I stand to mourn the death of more than 28,567 Palestinians and the injury of over 68,219 Palestinians. I'm standing here to inform you that for the past 4 months, my people have been subjected to daily massacres. Thousands of Palestinians are still under the rubble, and the bodies of thousands of Palestinians have decomposed in the Gaza Strip. Today, I stand to inform you about the criminal history of the Israeli occupation so-called state, a history filled with massacres and crimes. This occupation has destroyed homes, has demolished houses, rendering over 70% of these homes uninhabitable in the Gaza Strip. This occupation has bombed hospitals and killed medical staff. It is not possible to talk about human rights in the world without addressing the situation of human rights in Palestine. Palestine is the only country in the world that is still under occupation. This occupation has resulted in the displacement of millions of Palestinians. A moment of silence, actually, in remembering all those who has been killed, murdered, in West Bank, Gaza, and then in social movement all over the world, along with all the martyrs. अब हामी 2 मिनटको लागि मौन धारण गर्छौं। प्यालेस्टाइनको वारमा जतिजना मारिनुभयो उहाँहरू र संसारभरि सामाजिक आन्दोलनमा मारिनु भएका
धेरै विभिन्न खाले आन्दोलनमा मारिनुभएका र साथसाथै हामीसँग विभिन्न लोकतन्त्रको लागि शहीद हुनुभएका सबै व्यक्तिहरूको सम्झनामा हामी 2 मिनेट मौन धारण गर्न चाहन्छौँ। सबैजनालाई उठिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो समय सुरु हुन्छ अब। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, अब म हाम्रा अर्का वक्ता हुनुहुन्छ जो बङ्गलादेशबाट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि काम गर्नुहुन्छ र आफू पनि व्हील चेयरमा हुनुहुन्छ। नासिमा अख्तरलाई आफ्ना भनाइ राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट नासिमा अख्तर, who is a disability right activist who has been working towards advancing the rights of persons with disability. She is from Bangladesh. So Nazma, floor is yours. আসসালামু আলাইকুম, আমি নাসিমা আক্তার, কাজ করতেছি প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদে। প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ হচ্ছে যে জাতীয় পর্যায়ের একটা নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশন। বাংলাদেশের 23টা জেলা এবং 111টা ওপিডিদের নিয়ে কাজ করেন, যেখানে প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকারের কথা বলেন। তো প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকারের জায়গাটাতে আমরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কাজ করতেছি। আজকে এই ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল প্রোগ্রামে আসলে আমাকে অর্গানাইজার কমিটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনালকে বাংলাদেশের বর্তমান কারেন্ট সিচুয়েশন আসলে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। প্রথমে আমি যেটা বলবো সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 2001 সালে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন তৈরি হয়েছিলেন, যেখানে যার আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 2013 সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন, যেটিকে বাংলাদেশের সরকার স্বাক্ষর করছেন, এবং তারই আলোকে 2015 সালে যেটিকে বলে যে ঘোষণাপত্র বা কৌশলপত্র, যেটাকে সরকার বাস্তবায়ন করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ করছিলেন। সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেটি আছেন বাংলাদেশ সরকারের, সেখানে প্রতিবন্ধী নারীদের কথা বলা আছেন 39 নম্বর ধারায়। কিন্তু বর্তমানে আসলে আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে এই যে আমাদের দেশের বাংলাদেশের এত আইন, এত পলিসি, এত নীতি
তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবায়নের বা ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটাতে খুবই সীমাবদ্ধতা, যেখানে সরকার এখনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সামাজিক আওতার বিষয়টিকে তাদেরকে বিবেচনা করে। আমি মনে করি যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং নারী প্রতিবন্ধীরা সমাজে বেশি পিছিয়ে আছেন। একদিকে নারী, একদিকে প্রতিবন্ধী, এবং প্রতিবন্ধী নারীরা সবচেয়ে বেশি সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। তো এই নারীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে গেলে আসলে তাদেরকে সংগঠিত করা দরকার, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা দরকার, তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য সেই জায়গাটাতে কাজ করা দরকার। আমাদের দেশে আমরা এখন পর্যন্ত একটা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে পারি না যেখানে একজন প্রতিবন্ধী নারী নির্বিঘ্নে তার জীবনযাপন বা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে বা মার্কেট করতে পারবে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত প্রবেশগম্যতার জায়গাটাতে এখন পর্যন্ত পরিবর্তন আসে নাই। অনেক বিল্ডিং হচ্ছে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য র্যাম্পের ব্যবস্থা বা ওয়াশরুম। আমাদের দেশে আসলে বিল্ডিং কোড আইন যদিও তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই আইনটাকে আসলে আমাদের দেশে মানুষ এখন পর্যন্ত ফলো করতেছে না। তো সেই জায়গাটাতে আমরা মনে করি যে আমাদের আরও বৃহত্তরভাবে কাজ করা দরকার। এই জায়গাগুলোতে পরিবর্তন আনতে গেলে হয়তো আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জীবনে পৌঁছাইতে পারবো। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে প্রতিবন্ধী বর্তমান বাংলাদেশে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপিডির কথা বলবো, এই ওপিডিদেরকে আসলে ফান্ডিং সিচুয়েশন বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ওপিডিদেরকে ধরে রাখা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াইছে। কারণ বাংলাদেশের সরকারের একটা এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা আছেন, যে যাদের রেজিস্ট্রেশন আছেন এনজিও ব্যুরো তারাই শুধু ফান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো এই জায়গাটাতে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ওপিডিদেরকে সেই সক্ষমতা নাই, সেই ক্যাপাসিটি নাই। এই জায়গাটাতে আমাদের কাজ করা দরকার এনজিও ব্যুরো এবং সরকারের সাথে। তো সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম একটি প্ল্যাটফর্মে আমাকে কিছু বলবার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তো আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী 42% প্রতিবন্ধী নারী এবং 58% প্রতিবন্ধী পুরুষ। তো আমরা মনে করি যে এই যে ডাটাবেজে সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবন্ধী নারীরা এখন পর্যন্ত পিছিয়ে আছেন, তারা সংগঠিত হইতে পারতেছে না, ফ্যামিলি তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে না। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার বক্তব্য আমি এখানেই সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। नेपालीमा हैन, नेपालीमा नासिमा यु स्टे हियर ब्रो। एकन बस्नु। यो छोटोमा खास गरी बाङ्लाबाट नेपालीमा अनुवाद गरिदिन खोजेको। म नासिमा बाङ्लादेशबाट आएको र मलाई धेरै खुसी लाग्यो यहाँ तपाईहरुले मलाई निम्तो दिनुभयो। र बाङ्लादेशमा खास गरी के समस्या छ त भन्दाखेरि नीतिहरू छ, कानुन छ, तर त्यसलाई लागू गर्नको लागि समस्या भइरहेको छ। दोस्रो, हामी जुन समुदाय छ, अपाङ्गता भएको समुदाय, हामीहरूसँग आफूसँग उचित रूपले पैसा छैन, त्यसकारणले पनि हामीले दर्ता गर्न पाएनौँ र दर्ता गर्न नपाउँदाखेरि हामीले जुन खालको फन्डहरू कोषहरू पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले पाएनौँ। र अर्को भनेको यातायातमा हामीलाई पहुँचको समस्या छ। यति नै होला। खास गरी समय पनि छोटो छ। यो अचानक यो मैले बाङ्लाबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नु पर्यो, बाङ्ला मलाई थोरै आउने भएकोले धन्यवाद। Turn for the cultural dance. यो सांस्कृतिक गीत र डान्स चाहिँ नेफिनको टिमबाट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। लेट्स वेलकम इन्डिजिनस फेडरेसन टिम फर द कल्चरल डान्स।
Cultural team from the indigenous community, indigenous the federation. So thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद आदिवासी जनजाति महासंघका तर्फबाट। भन्दा पहिले I would like to present Ashok Bharti. Ashok Bharti, born in an extremely Dalit family, is renowned Dalit leader, civil society activist and organizer of World Social Forum process in India. He is a founder of National Confederation of Dalit and Adivasi organization known as NACADOR and World Dignity Forum. Currently, he is working for institutionalization of World Social Forum process in India and build the process in Global South. हामीसँग म अगाडि अशोक भारतीजीलाई यहाँ अगाडि आउन अनुरोध गर्छु। उहाँ दलित परिवारमा जन्मिनु भएको हो र हाम्रो साँच्चीकै साउथ एसियादेखि लिएर सबै ठाउँमा उहाँ चाहिँ एउटा दलित नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ विश्व सामाजिक मञ्च इन्डियाको एउटा
सङ्गठनकर्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नाकाडोर भन्ने संस्थाको जुन दलित र आदिवासी अर्गनाइजेसनहरूको जुन एउटा फेडरेसन छ त्यसको पनि फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ विश्व सामाजिक मञ्चलाई भारतमा र यो विश्वको दक्षिणी विश्वमा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने काममा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब म अशोक भारतीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। फ्लोर इज योर्स अशोकजी। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। मैं थोड़ा ही कोशिश करता हूं कि क्योंकि काफ़ी संख्या में हमारे नेपाल के साथी लोग हिंदी समझते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें थोड़ी भाषा दोनों भाषाओं में इंग्लिश और हिंदी बोलूँगा। मैं नेपाल के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वर्ल्ड सोशल फोरम का, ख़ास तौर से डॉक्टर अर्जुन कार्की का, दोस्त नेत्रातिम सिन्हा जी का और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया जनवरी 2023 में एक छोटी सी गतिविधि के तौर पर नेपाल में शुरू हुई थी, आज एक बृहद विशाल इस बड़े आंदोलन के रूप में, एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर आज यहाँ उसकी समापन की तरफ हम जा रहे हैं। और इसके लिए मैं पूरे नेपाल के तमाम जन संगठनों को, नेटवर्क को, एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को, ट्रेड यूनियन को, तमाम लोगों को भारत की तरफ से और वर्ल्ड सोशल फोरम की तरफ से कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं। आप सबको इस बात की बधाई हो। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रक्रिया से पहले भारत के लोगों ने पूरे देश में साल भर इंडिया सोशल फोरम की एक प्रक्रिया चलाई। हम देश के कोने कोने में गए, 10 राज्यों में इंडिया सोशल फोरम की प्रोसेस हुई। इंडिया सोशल फोरम की प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन नेपाल में वर्ल्ड सोशल फोरम के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ जो कदम है, ये आज के समय में कई बातों के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज के समय में यहाँ पर तमाम तरीके के लोग शामिल हैं। गरीब, वंचित, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत और जाति, रेस, एथनिसिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज, जेंडर और तमाम तरह के अत्याचारों और हिंसा के शिकार लोगों के संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का क्राइसिस है, वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का क्राइसिस दिखाई दे रहा है। द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड is facing a serious crisis. You can see the war in Ukraine. You can see the occupation, illegal, unjustified occupation in the Gaza. And this is a threat to the democracy. And as a victim of the caste, race, gender, religious minorities, we have to remember that democracy is the only hope for this world. If we do not rise to defend the democracy, authoritarian regime will never allow the discriminated, excluded and deprived people to have the equal right in this world. Therefore, this is a challenge of the democracy, and World Social Forum is a process that promotes democracy. We have to remember that we also see that as a social organization, as a movement, as a network, we are having a diverse opinion and diverse direction of our own movement. Environment speak in one language, gender discourse speak in another language, exclusion, people fighting exclusion, waging another language, farmers and labor, they have their own concerns. We must remember, fighting
independently will not be able to throw out the neoliberal regime from the world. Therefore, wherever we are fighting gender inequality, we are fighting caste inequality, we are fighting race inequality, we are fighting religious inequality, we are fighting for the rights of disabled, we are fighting for the dignity and human rights. We have to remember that only democracy is the hope. Democratic forces can only throw away the neoliberal regime. Therefore, friends, I request you all, the World Social Forum process, which unite all of us, because it does not impose its own agenda on you, me, or anybody else. It's a space where we can celebrate our own agenda, our own identity, our own concerns. So therefore, I request you all, let us pledge to strengthen the democracy. Let us pledge strengthen the dignity. Let us pledge the fight for justice be strengthened. Let us fight. There should be equality among the people. We should fight against inequality. Unless we all come together, our rights will not be protected. Let us stand against the authoritarian regime, whether they fight in the name of the religion, whether they stand in the name of protecting one country from the other. Let us stand against the authoritarianism. Authoritarianism is the biggest threat. Authoritarian regime is supported by the economic neoliberalism. Therefore, if we want justice, we want peace, we want dignity, we want to root out, annihilate the discrimination, let us celebrate the democracy. Let us throw out the authoritarian regime from this world. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat. He has done extensive field research on the rural situation in China. So म अब यहाँनेरि प्रोफेसर वेन तेजुनलाई बोलाउन चाहन्छु. उहाँ चाहिँ यो ग्लोबल युनिभर्सिटी फर सस्टेनेबिलिटी दिगोपनको लागि भएको ग्लोबल युनिभर्सिटीको एउटा फाउन्डिङ मेम्बर हो र उहाँ रुरल रिकन्स्ट्रक्सन मुभमेन्ट चाइनाको रुरल रिकन्स्ट्रक्सन मुभमेन्टको एउटा पायोनियर हुन्छ. उहाँ 40 वर्षदेखि त्यसमा काम गरिराख्नु भएको छ. उहाँले 10 वटा भन्दा बढी किताबहरू लेख्नु भएको छ र धेरै फिल्ड रिसर्चहरू चाइनामा र अरू ठाउँमा पनि गर्नु भएको छ. त्यसैले म प्रोफेसर वेनलाई बोलाउन चाहन्छु र नाउ आई वुड like to request once again Professor Wen to deliver a speech, and I would like to request all our speakers to maintain the time, that is 7 minutes. Thank you so much. Okay, my dear friends and dear comrades, let me send my warmly regards to rural reconstruction movements both in Nepal and in China. On behalf of thousands of volunteers and small local teams, we have done a lot of job in local. So when we're facing the challenge of the globalization, we must very much emphasize the peasants' rights, not only in countryside, but in macro, in national level. Why that we must emphasize the peasant rights? It's because the globalization nowadays turned to a global crisis. In China, every year we have 25 million migrant workers laid off, and several million individual workshops closed down, and 400,000 companies closed down. So it's a big crisis in coastal area and in big cities. So we must change the development method and the development programs. So nowadays, caused by global crisis, we are very much emphasize the rural revitalization. It means that we must emphasize the equal rights both in urban and rural.
even more benefits to the rural people. So nowadays in China, there are almost 7 trillion investments from the government side and from the cities invest into the infrastructure construction and the social construction to the countryside. We must make the rural people not only have long-term land rights, we also need to strengthen their have a natural resources rights. And by such kind of sovereignty, I mean the local peasants, they do have the resources sovereignty, we can based on that to encourage the local people organize themselves to have self-empowerment, and they can have a self-organization and self-development. So that is our program, not nowadays, but long-term history. So we would like to emphasize to the year 2035, almost all the rural households will have the 5 basic infrastructure construction to every household. Means that pavement road, pipe water, electricity, and gas, and internet. So also, all the rural people's family, their children can have a free education. Their aging people can have a pension fund. So whatever in urban, the people in urban have, we will make all the rural people have. To the year 2035, we will have a 500 million people live in countryside. Also, caused by the global crisis, there will be large number of the citizens will go into countryside to stay in the village. So now such kind of social movements has been started. We hope the rural reconstruction not only joined by the peasants, by the rural people, but also joined by the citizens from the different city, from different area. So by that, we will reduce the gap between the rural and the urban to make every people. You know that we have a 1.43 billion population. To make every people can enjoy so-called Chinese featured modernization. That is our purpose. We will do our efforts. By such kind of crisis, we will turn the crisis into the opportunity to turn the investments from the coastal area development into the inland, into the mountain areas. So we will get another different way. We think that's alternative. So the World Social Forum, not only here very important, but also in the world very important. We hope we can exchange to know how to make inclusive, sustainable safety for every people in the world. Thank you very much. Of World Social Forum. अब म अर्को वक्तालाई यहाँनेरि बोलाउन चाहन्छु. Now I would like to request another speaker to the stage, Professor Thomas Wahlgren. He is Professor of Philosophy, University of Helsinki, Finland. He is the activist for solidarity, ecological justice and democracy. He is also the founding member of Vasudhaiva Kutumbakam Alliance for Comprehensive Democracy. He is active in the World Social Forum process in 2002. Thomas Wahlgren professor हुनुहुन्छ फिनल्यान्ड युनिभर्सिटी फिनल्यान्ड हेलसिङ्कीको र एक्टिभिस्ट ऐक्यबद्धता यो वातावरणीय न्याय र लोकतन्त्रको अभियानमा एक्टिभिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने एउटा अलायन्स छ जुन चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चाहिँ सक्रिय अलायन्स छ त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ वर्ल्ड सोशल फोरमको प्रक्रियामा 2002 देखि सक्रिय हुनुहुन्छ. So Professor Thomas, now floor is yours. So I would like to request you to deliver your speech.
Dear sisters and brothers, dear fellow travelers, dear comrades in our struggle for another world, for a world of many worlds, for a world of hope and beauty, a world where no one goes to bed hungry and no one is left alone. Today, as we meet here in Kathmandu, the monster we are fighting against may seem invincible. Many good people die today in wars and in prisons, and many of our fellow beings, birds and insects, flowers and trees, rivers and mountains are at peril. We see that, we know that, and our hearts are full of pain. But we have our dignity and our courage. We have our loved ones. We have their wisdom and their joy of life, which fills us with hope. And we have our daily work in the movements that fight casteism and racism, capitalism and patriarchy, extractivism and war. The roots of our struggle are as deep as the oceans, and our dreams reach higher than the Himalayas. Our history is long, the future is open. But there's one thing we know. Whenever we stand up for ecological justice, for democracy, and for the dignity of all, we have already won. In these moments, truth is with us. That is how we reach our destiny. That is where we fulfill our purpose and realize our freedom and our worth. We must celebrate this moment. But we must also think clearly, plan well, and act effectively. The context here in Nepal is the challenge to build this nascent democracy. The regimes in your neighboring countries at the moment, in China and India, are strong and ugly. The brutality of global injustice and capitalist and casteist exploitation deeply hurts too many in this beautiful country every day. And still you have achieved things. The transition from monarchy to a democratic republic in 2006 and the adoption of an inclusive constitution are remarkable events in world history. When hundreds of thousands of activists gathered in Porto Alegre in Brazil and in Mumbai in India in the beginning of this century, the context of our struggles was defined by the word neoliberalism. We stood united against neoliberalism, and we still do. But neoliberalism is no longer the precise word we need to understand what we are up to against today and what we must change. The globalization of the markets at the time, the rise of corporate power, and the alliance between corporation states and transnational institutions is still there. But after the financial crisis in 2008, our adversary has changed its skin. It no longer even pretends to stand in the service of freedom and democracy. Instead, criminalization of dissent, violent repression, lies and propaganda are on the rise in too many countries. The right name for our adversary today is authoritarian capitalism. This truly ominous combination of anti-democratic, violent use of state power and of crude capitalist exploitation is our new challenge. There is also, let us not forget, the imminent danger of the final war due to competition for power and scarce resources between the nuclear powers. On a smaller scale, let me report with sadness and anger that the rise of authoritarian capitalism is not the privilege of the large countries. Even in my country, Finland, in the far north, and in my neighboring country, Sweden, we are giving up our long tradition of military non-alliance. We are closing our borders and we are joining NATO. And as I speak today, our finest achievement, the Nordic model,
with high taxation, equality in education, and reasonable social security for all, that was built by strong movements throughout the 20th century, is also under attack. We have come together in Nepal in dark times, but in these times of darkness, we do well in remembering two things. Pessimism is the privilege of the well-off and the morally insensitive. We who have gathered here in Kathmandu today, on location and online, we know that history is open and that unexpected things do happen. We see today in all countries, expressions of strength, the movements of solidarity with Gaza and Palestine and Ukraine and for climate justice are strong. The struggles for peace on earth and peace with earth are growing. And beneath the surface, everywhere, a pluriverse of new prefigurative initiatives in which the world we want for all is realized today. There is also in my country now an abundance of joyous, youthful energy in the struggles, an abundance I have not seen for many years. And also in my country, we are inspired by and support the struggles of the Zapatistas and the autonomous administration in Rojava and many other fine movements and people across the globe. Sisters and brothers, we have hope, we strive for truth, and we know that the power of truth is the greatest power in the cosmos. We acknowledge and share our pain, but we do not underestimate each other and ourselves. We are powerful, we are needed. Our cooperation and our solidarity is needed. The World Social Forum is not an organization that places power in the hand of a few leaders. It is a counter-hegemonic process which uses the transformative, emancipatory power of respectful dialogues organized at different levels, from the local to the global. Let me quote a message I received recently from two friends in Brazil, Chico and Stella Whittaker. They cannot be here today with us, but they're right. The World Social Forum does not strive to build a new political actor, but to create opportunities for people to cooperate and meet in open spaces where they can interact horizontally with each other in mind, exchanging knowledges and experiences without leaders controlling them. In discovering convergences, they increase their power. These were the words from Brazil, from Chico and Stella Whittaker I want to share with you. And here, in the open space of the World Social Forum processes, everyone is empowered. Here new forms, new qualities of power are born that will empower others still. Our work, our struggles, our solidarity is our shared reality. I'm happy that I can be part of this reality here with you today. Another world is possible. We are building it together in Kathmandu and on all continents. Thank you all. So now I would like to request our wheelchair dancer, Sarita Thulung and Sanikanchi Tamang.
Request for the deliberation Dr. Jomo Kwame Sundaram. He is academic, he is economic justice activist and political economy analyst from Malaysia. He is critical writer, thinker, analytical, and then definitely he always stands against neoliberals, against neoliberal policy, and then he is one who always kind of believes on social justice and human rights and then works towards that. So, Professor Jomo, the floor is yours. Brothers and sisters, friends all, I want to thank you, especially those of you who are sitting on this side facing the sun, for your patience in staying here to listen. We live in very challenging times, and it's often very difficult for us to see the challenges which we face before us because there seem to be so many of them. For the poorest of the poor, for over a decade, their conditions have become worse. This is very clear now from all the international data as far as food security is concerned, as far as poverty is concerned. But let us try to understand the origins of this. As you all know, this world has lived with imperialism for over 2,000 years. The time of Jesus Christ, he had to deal with the consequences of Roman imperialism. Over 500 years ago, when the Spanish first reached this part of the world, or Southeast Asia specifically, there was resistance. Resistance led by a man named Lapu-Lapu in an island called Mactan against the Spanish conquistadors. Later, of course, we have seen that imperialism has changed very, very significantly over time, as it always changes. And we have seen how it has become combined in many new ways with capitalism. And this is the kind of capitalism and imperialism which we have seen for at least a century and a half. Over a century and a half ago, at least two people from this region began to write about the problems of imperialism. Said Jamaluddin al-Afghani was one. Obviously, from his name, you know that he's from Afghanistan. And the other one was Dadabhai Nauroji, an Indian who became a Liberal MP in the English Parliament.
they first identified imperialism. They described it in different words. They talked about injustice, they talked about drainage, and so on and so forth. But this was very important because they anticipated, long before many more radical thinkers, the development of a new stage of imperialism. And we have seen this changing for the last 150 years. We are now living in a very, very special time when we have seen resistance to imperialism not necessarily always bringing better. We saw, for example, that the American War of Independence was fought against British imperialism, but what it resulted in was continued expansion of the United States against the Native Americans, against the slaves, and so on. Similarly, we see that in the more recent period, in the 20th century, for example, we have seen crisis of capitalism and imperialism. And the American president, Franklin Roosevelt, is very well known for saving capitalism by changing the terms of imperialism. He realized that colonialism couldn't go on. And this is the conditions which gave rise to the birth of the United Nations and other such so-called multilateral institutions. But now, at a time when imperialism is weaker in some ways, but stronger in military terms, we see how this is changing. And this is changing in important ways which have very important consequences. Until the last decade, we did not see, for example, an explicit American military presence in the 20th century, in Africa. And we saw at the beginning of the 21st century, a man given the Nobel Prize for Peace who sets up an African command in Africa to control Africa and so on. Not on behalf of the African people, of course, but instead to protect the interests of not only of European interests, but also, of course, of American interests in that part of the world. We now live in a world where we are seeing very ugly manifestations, very ugly consequences of this imperialism, and we need to recognize it for what it is. And we also need to know that what is happening in the world today is the result of the development of a particular type of imperialism which keeps on changing its face. And we also need to recognize that in this situation, we need to begin to organize and effectively against these new forms of imperialism and its other manifestations. This is the challenge which we face today. And today, I think all of you know that one of the greatest consequences, one of the greatest direct impacts of imperialism and the changes of the old empire in favor of the new forms of empire is what is happening in Gaza. What is happening in Gaza, of course, is the result of many complex developments. But the people who are struggling in Palestine, who have been struggling in Palestine against settler colonialism and against this ugly manifestation in terms of modern-day apartheid, are facing struggles which we all need to express our solidarity with and support in more direct ways insofar as we can. This, I think, is very crucial because it challenges us to deal with the manifestations of imperialism in our times. In our situation today, we need to recognize that just as people recognized over a century ago that the struggle, the primary struggle it is very unlikely that capitalism now is going to collapse. Capitalism is stronger than ever. It will not collapse on its own. But today, the biggest struggle in the world today is against the people of the globe, what is now termed the global south, against the global north. And this, unfortunately, is the situation which we face. We are impoverished in many ways, and we are disunited. So we need to unite. We need to unite to be able to face these challenges with effectively. And for this reason, the World Social Forum and its call for solidarity to remind us that a new world is possible becomes all the more important. Thank you very much. A luta continua.
वाल्डेन बेलो एकदमै हामीले सुनेको नाम रिकग्नाइज नाम हाम्रो एक्टिभिस्ट उहाँ फिलिपिन्सबाट हुनुहुन्छ Dr. Walden Bello is from Philippines, but his work is not limited to one country. He is chair of Board of Focus on Global South, professor at the State University of New York, Binghamton, recipient of Right Livelihood Award in 2003. He has been named as Most Distinguished Human Rights Defender by Amnesty International Philippines in 2023. He has authored more than 24 books. The latest one is Counter-Revolution, the Global Rise of the Far Right. So now to add on, he just came from London Assembly of Global Intellectuals of Conscience that proposed urgent measures to stop the genocide in Gaza and implement the resolution preventing genocide of the International Court of Justice. So let's welcome Dr. Walden Bello. Please, floor is yours, and that you also have 7 minutes, please. I would like to thank the organizers for inviting me. And before I begin, I would like to say, long live the working people of Nepal. Friends, comrades, in 2001, over 23 years ago, the first World Social Forum was held in Porto Alegre, Brazil. The World Social Forum was conceived as a counterpoint to the Davos Economic Social Forum in Switzerland. Davos is the forum of the 1% who exploit us. The WSF is the forum of the rest of the world. Why was the WSF founded? First of all, it was founded to show that the people of the world were resisting the depredations of global capitalism. Secondly, it was to affirm the solidarity among the networks of justice and peace that had been struggling for so long against war and injustice. Finally, it was to lay out the plans for the future, for the achievement of another world that was possible if we put our efforts to it. There is a novelist who wrote that during the French Revolution, that was the worst of times and the best of times. Today, we in fact are living the worst of times. We have a climate catastrophe facing all of us. We have neoliberal capitalism, despite the fact that it has proven to be false in all its assumptions, as Professor John has said. Nevertheless, it continues to be well entrenched, exploiting. We have the global rise of fascism. Fascism which wants to put one group of people under the domination of another group of people. You have fascism right down south, now unfolding in India. It is out to convert a huge part of the population into second-rate, second-class citizens. And then we have 2 cases of genocide unfolding before our eyes. Right in our neighborhood, in Myanmar, a military junta, a very small clique of people, is determined to kill
all opposition. But it will not succeed because right now, the Myanmar resistance controls 2/3 of the country. And most of all, we have genocide. Genocide happening in Gaza, as many have already mentioned. 24,000 people killed, over 60,000 injured, 70% of those being women and children. I have not had a good sleep ever since Israel invaded Gaza. Genocide happening in Gaza, as many have already mentioned. 24,000 people killed, over 60,000 injured, 70% of those being women and children. I have not had a good sleep ever since Israel invaded Gaza. I think all of us feel the same way. Because why? Because we're human beings. We cannot enjoy a moment of happiness if a massacre is happening in another part of the world. And we ask ourselves, why is Israel so determined to kill Palestinians? Why are the Americans so determined to supply the armaments to allow the Israelis to commit genocide? Why have the Western nations that once bragged that they were the peak of civilization, they are now promoting barbarism in their support for genocide in the Gaza? Well, let me say, is this also going to be the best of times? Well, that depends on each and every one of us. This can be the best of times despite the darkness that is in fact engulfing the world at this point. What do we need to do? What must WSF Nepal 2024 stand for? It must stand for the affirmation of all of us to save the planet from climate catastrophe and the ravages of capitalism. It must affirm our determination to reverse the process of inequality that is destroying livelihoods all over the world because of the way that this is the logic of global capitalism. It must mean that we must all stand up and put our bodies on the line against the emergence of fascism. And I would like to say it must mean that we must put our bodies on the line against genocide. Let me just end by quoting from an interview I made with the Hamas leader Osama Hamdan in Beirut in 2004. And I asked him if he did not fear for his life given his being a profile leader of the organization. Here was his answer. Quote, I am on 2 assassination lists, one with 6 names and another with 12 names. But I am living my own life normally. I eat breakfast with my children. I always try to do this because this is the only time I can talk to them and ask them about their day and their plans. I visit my friends and my friends visit me. I just recently went with my children to swim in the sea. You just die once, and it can be from cancer, in a car accident, or by assassination. Given these choices, I prefer to die by assassination. Friends, comrades, that is the spirit of resistance. That is the spirit of the Palestinian people. Friends and comrades, Palestine needs us, but we also need Palestine, for they are leading the way for all of us. Thank you very much.
Thank you, Dr. Walden Bello. We need Palestine. We need Palestine, and that's the kind of to die with assassination rather than kind of being colonized. So that was the spirit, what he said. So thank you so much. Now it's time for the dance. Nepal, as we said that, okay, we are diverse countries, so a lot of different indigenous community are here. So kind of now another dance from the Tharu community, and then this dance has been coordinated by Meena Swarnakar and from the National Democratic Confederation of Nepalese Trade Union Nepal. So अब हामी थारू डान्सलाई स्वागत गरौँ. यो मीना स्वर्णकारज्यूले कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट कोअर्डिनेटेड डान्स हो. स्वागत गरौँ. त्यो मजाले ताली बजाएर स्वागत गरौँ.
खाली उठाओ धन्यवाद. Thank you very much. Let's give big hand to them. Thank you. धेरै धन्यवाद यार सबै. So much. Let's give big hand. धन्यवाद धेरै एकचोटि मजाले ताली पिटेर धन्यवाद है त. धेरै धन्यवाद. अब हामीसँग एकदमै अब एसियाबाट हामी अफ्रिका जाँदैछौँ. युरोप हामीले सकायौँ. अब अफ्रिका जाँदैछौँ. हामीसँग अफ्रिकाबाट एउटा साथी जो लाभिया क्याम्पसिना अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, फेमिनिस्ट एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ, अफ्रिकन ग्लोबल कन्भर्जेन्स अन स्ट्रगल अफ ल्यान्ड वाटर र पिस एन्ड एग्रो इकोलोजीमा काम गर्नुहुन्छ र घरेलु श्रमिकहरूको पनि संस्थाको एउटा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. बरी तुनकारा गाम्बिया, उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु. बरी तुनकारा गाम्बिया इज अ फेमिनिस्ट एक्टिभिस्ट एन्ड अ मेम्बर अफ द वेस्ट अफ्रिकन ग्लोबल कन्भर्जेन्स on the struggle of land, water and peasant agroecology and the president of the Domestic Workers' Right Protection Association Gambia, and she is part of Lavia Campesina. Bari, floor is yours. Good afternoon to ladies and gentlemen, esteemed panel members of the World Social Forum 2024, and a warm greeting to all brave farmers all over the world, from Africa, Latino, Asia and Europe. It's an honor to stand before you on behalf of the global convergence on the struggle of land, water and peasant agroecology, which is also a member of the Lavia Campesina, where we work side by side to raise the voice of the farmers, to also protect the rights of the farmers at all levels, to set light on the crucial issues that affect the lives of millions of people across the world. It's of no doubt that agriculture forms the greatest part of the Africa's economy and the world at large, and sustain the livelihood of the majority of its population. However, the rights of farmers are often overlooked and undervalued, leading to the significant change and injustice that hinder their right to thrive. First and foremost, it's essential to recognize
recognize the fundamental rights of farmers to own and control the land they cultivate. It speaks volume when farmers remain vulnerable and experience all kinds of social injustice, while we all know that the economic sustainability of our the economic sustainability of our agriculture all lies in their beautiful hands and also minds. Land tenure security also is a pressing issue in many African countries and the world at large, where small-scale farmers often lack formal land rights, making them vulnerable to land grabbing, displacement, and exploitation. Lack of secure land tenure also not undermine the economic stability of the farmer, but also perpetuates a cycle of poverty and food insecurity. Farmers also have right to access to essential goods and inputs, such as high-quality seeds, good fertilizers, and also agricultural technologies. Accessing to these resources and also inputs is also key for enhancing agricultural productivity and for ensuring food insecurity across the world. However, farmers face barriers such as limited access to markets, exorbitant prices, and inadequate infrastructural development that hinder their ability to adopt the modern and the sustainable agricultural farm practices. It's equally important when we talk about farmers, we also talk about fair and transparent markets. Small-scale farmers often encounter significant challenges when it comes to accessing to markets, when it comes to obtaining a fair product, when it comes to obtaining a fair price for their produce, and also competing with large agribusinesses. Unfair trade practices, lack of enough financial support, lack of enough market information, and also the inadequate infrastructural development all contribute to the marginalization and discrimination of farmers in the global agricultural value chain. Considering the rights of farmers, it's also essential to emphasize the significance of empowering farmers, especially women and youths, through trainings, capacity building initiatives, and also education. Because youths and women play a very vital role in the agricultural production, yet they face significant barriers, especially women, that limit their participation and also the decision-making power in the agricultural sector. But therefore, by investing in the women and also the youths farming practices, I believe we can unlock the potential of the agriculture of the world and also contribute to gender equality and social development. I believe considering all this and also to address all these challenges, it requires a multifaceted approach where policymakers, small civil society organizations, the private sector, and the international partners are also included. It necessitates the implementation of significant policies, the enforcement of land rights, the promotion of sustainable agricultural development, but most especially to establish a fair and inclusive market system. It also demands an effort for farmers' voice to be amplified, and also to make sure their experience and perspective are central to decision-making processes. Another world is possible if we come together and work towards a future where farmers are respected, empowered, and recognized, towards a future where farmers have secure land tenure, to work to a future where farmers can get access to essential resources and inputs, to work to a future where farmers can get fair market opportunities, but most especially also at least to have the knowledge and skill to thrive in the rapidly evolving agricultural landscape. Therefore, by championing the rights of farmers, we can foster a sustainable development, eradicate poverty and also hunger, but most important also like to create and also to build another equitable and prosperous future for the world as a whole.
In that regard, I will introduce you to the slogan of the Global Convergence on the Struggle of Land, Water and Seeds, and which I don't need not to remind you as a member of the La Via Campesina, whereas our only priority is to make sure that the voice of farmers are heard. In that case, the Global Convergence always conduct caravan every 2 years, where we mobilize over 300 participants from the 15 West African countries to pass through 5 countries to raise awareness and advocate, meeting the people at community level to make sure the voice of the farmers are heard. The voice of the brave women and also youths are also heard, but also accompanied with a very, very powerful slogans, which reads, "My water, my life, my seeds, my life, my land, my life." And then another beautiful line follow where you heard the voices of the victims, the voices of the women and youths, where, as we said, we will fight to the end and never give up, because our rights is our life. Thank you. Thank you, buddy. Our rights are our life. We should continue fighting. Our land is our land. एकदमै गर्व पनि लागेको छ, एकदमै खुसी पनि लागेको छ। आज हाम्रो सामु डाक्टर अलेडा गुएभारा हुनुहुन्छ। उहाँ चे गेभाराको जेठी छोरी हुनुहुन्छ। हुन त उहाँ आफ्नो नै उहाँको आफ्नो नाम नै काफी छ, तर उहाँ चे गेभारासँग पनि जोडिनु भएको छ भन्दाखेरि झन् खुसी छ। उहाँ एउटा डाक्टर हो र मानवाधिकारको च्याम्पियन हो। उहाँले चाहिँ खालि अनदर वर्ल्ड इज पोसिबल भन्ने सपना मात्रै देख्नुहुन्न, उहाँले त्यसलाई पोसिबल बनाउने काम पनि गर्नु भएको छ। त्यसैले उहाँले एकदमै धेरै आफ्नो मेडिकल प्रोफेसनबाट त काम गर्नु नै भएको छ, तर साथसाथै हृदयमा चाहिँ सामाजिक आन्दोलन छ। उहाँले बच्चाहरू डिसेबिलिटी भएको बच्चाहरूको लागि या अरू रिफ्युजी बच्चाहरूको लागि पनि होम्सहरू पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ र उहाँ आफ्नो धेरै ठाउँमा चाहिँ अब राहत मतलब यो अप्ठ्यारो बेलामा जानु पनि हुन्छ। Now I am very happy to introduce Dr. Aleida Guevara, who is a physician and champion of human rights. She doesn't only dream for another world, but she acts to make that possible. Now I would like to take a quote from her one of the interview which was taken Guardian. That is, in quote, "If we want a different world, we need to work to achieve it. We can't wait it to fall out from the sky." यदि हामीले अर्को संसार चाहन्छौँ भने त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ। अर्को संसार हामी कहाँ त्यतिकै आकाशबाट आउँदैन। Apart from being doctor and political activist, she is a social activist in her heart. Guevara helps run 2 homes for children with disability in Cuba and 2 more for refugee children with domestic problems. As a pediatrician specializing in childhood allergies, she has also been involved in medical support for community in the flooded area around Cuba, Angola, and many more countries. So let's put our hands together and welcome Dr. Aleida Guevara. एकचोटि मजाले तालिका साथ Dr. Aleida Guevaraलाई हामी स्वागत गरौँ। उहाँ स्पेनिसमा बोल्नुहुन्छ र उहाँले बोलेको कुरा डाक्टर नेत्र तिमिसिनाले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ। Estimados señoras y señores, compañeros de lucha y de resistencia, hermanos y hermanas. Para mí es un gran honor estar junto a ustedes. Las reuniones de este tipo son siempre una fuerte fuente de sabiduría y de intercambio de experiencias. Nos conocemos y contactamos, por lo que rompemos el sistemático aislamiento al que nos someten. Uno de los conflictos que más nos golpean es precisamente la falta de información adecuada y fidedigna, porque si no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, de ninguna manera podemos reaccionar. Y como por lo general esas informaciones están tan manipuladas,
Tampoco podemos hacerlo bajo el riesgo que la humanidad habrá perdido la ética que nos hace seres humanos y no bestias sedientas de poder con carencia de cualquier sentimiento característico de nuestra especie. Alcemos nuestros brazos, hagamos caravanas de solidaridad con alimentos y medicamentos para Gaza, rompamos el bloqueo de Israel para poder sentirnos dignos seres humanos. Palestina representa hoy la carga necesaria para unirnos a su entorno y poder comenzar a lavar la costra tenaz del coloniaje. Quiero terminar mis palabras con un poema que escribiera un día antes de morir la joven escritora palestina Heba Abu Nada. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Hasta la victoria siempre. Thank you very, very much, Dr. Elida Guevara. Actually, प्याजाले ताली पिटेर धन्यवाद भन्नु त. हस्, thank you so much. अब डाक्टर नेत्रले यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नको लागि अनुरोध गर्छु. धन्यवाद. एकदम छोटो उल्था गर्छु. उहाँले सबैलाई सम्बोधन गर्नुभएछ. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कमरेडहरू र सबै सामाजिक आन्दोलन सङ्घर्ष गर्ने रेसिस्टेन्स यो सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु. नेपालमा आउनु र यो विश्व सामाजिक मञ्चमा तपाईँहरूसँग सँगसँगै हुनु मेरो गौरवको कुरा. म अत्यन्त गौरवान्वित छु. आज हामी यहाँ भेला भएका संसारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई धेरै थाहा दिँदैनन्. जहाँ युद्ध हुन्छ, जहाँ विभिन्न खालका कुराहरू हुन्छन्, त्यसैले संसारमा त्यस्ता कुराहरूको हामीले प्रतिरोध गर्न, हामी त्यस्ता सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न यहाँ हामी आएका छौँ. त्यसै गरी उहाँले भन्नुभएको छ, अब हामीले हाम्रो एकता, हाम्रो एकबद्धता अत्यन्त जरुरी छ. र आज संसारमा जे भइरहेको छ, खास गरेर प्यालेस्टाइनमा बालबालिकाहरू त्यहाँ इजरायलले गरेको नरसंहार, यो सबै कामहरू अमेरिकाको उसमा समर्थनमा भइरहेको छ र त्यसको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ. संसारमा मानवता बचाउनका निम्ति हामी लागिरहनुपर्छ. उहाँको त्यो सन्देश दिनुभएको छ र उहाँले त्यसै गरी भन्नुभएको छ, यस्तो यो साम्राज्यवाद, यहाँ इम्पेरियलिजमको याङ्की इम्पेरियलिजम भन्नुभएको छ. जे गोबराले एउटा यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, एउटा त्यस्तो स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो जसलाई याङ्की इम्पेरियलिजम भनेको त्यो कामै, त्यो एउटा चाहिँ यो साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवादले सँग डराउनु हुँदैन. जबसम्म जनता एक भइरहन्छ, जब त्यो देशको माटोको लागि मान्छे लडिरहन्छ, त्यति बेर जस्ता सुकै बलवान पनि परास्त हुन्छन्. त्यो उदाहरण क्युबामा छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. क्युबामा अहिले पनि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको छ, तर त्यहाँको माटो, त्यहाँको प्रकृति, त्यहाँको कृषि, त्यहाँका सबै खालका आफ्ना प्रणालीहरू विकास गरेर अहिले पनि क्युबा अमेरिकासँग लडिरहेको छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ. र हामी संसारमा यो इजरायलले गरेको जुन ज्यादती छ, हमासका नाममा, कुनै पनि उसको नाममा यसको संसार एक भएर जोड्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ. र दक्षिण अफ्रिकाको जुन एउटा अहिले उदाहरण छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेको छ इजरायलको विरुद्ध, त्यस्ता कुराहरूमा हामीले साथ दिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रभरि सबै राष्ट्रहरूले त्यस्तो खालको अभियानहरूलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ, हामी सबैले सुनेको नाम होला, मेधा पाटकर भनेर. उहाँ भारतीय हुनुहुन्छ, तर भारतमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न. उहाँ वास्तवमा मेघा पाटकर चाहिँ एउटा नर्मदा बचाओ आन्दोलनसँग जोडिएको पर्यायवाची नाम जस्तो भएको छ. त्यसैले मेघा पाटकर चाहिँ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ. म उहाँलाई परिचय गराउन चाहन्छु. मेधा पाटकर is a renowned activist from India. She is a national convener and one of the
फाउन्डर्स अफ नेसनल अलायन्स अफ पिपल्स मुभमेन्ट। भारतमा जुन यो एउटा सङ्गठन, एउटा अलायन्स, एउटा सञ्जाल भयो, यो जनसङ्गठनहरूको, त्यसको फाउन्डर हुनुहुन्छ। सी इज अ फाउन्डर एक्टिभिस्ट विथ नर्बजा बचाओ आन्दोलन एन्ड फर 38 वर्षभन्दा बढीदेखि नर्बजा बचाओ आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। सी इज अल्सो फाउन्डर अफ घर बचाओ आन्दोलन, स्ट्रगल अफ अर्बन पुअर्स। वास्तवमा उहाँ घर बचाओ आन्दोलनसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ हैन, जुन सहरी सुकुम्बासीहरूको मुद्दासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। प्रेसिडेन्ट अफ श्रमिक जनता सङ्घ, ट्रेड युनियन एन्ड देन मेम्बर कोअर्डिनेसन कमिटी अफ संयुक्त किसान मोर्चा। उहाँ किसान अधिकारमा पनि काम गर्नुहुन्छ र वास्तवमा उहाँले 1992 मा गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज पनि पाउनु भएको छ। त्यसैले एन्ड सी इज प्रेसिडेन्ट अफ जनता सङ्घ, ट्रेड युनियन एन्ड मेम्बर कोअर्डिनेसन कमिटी अफ संयुक्त किसान मोर्चा, द फार्मर्स मुभमेन्ट। सी इज अल्सो विनर अफ गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज of 1992. So let's welcome मेधा। एकचोटि मजाले ताली पठाएर मेधा पाटकरजीलाई स्वागत गरौँ। मेधा, फ्लोर इज योर्स एन्ड देन ल्याङ्ग्वेज यु क्यान चुज। I am asked to speak in Hindi. Is it okay? आज यहाँ ये जो भीड़ नहीं है, एक संगठित शक्ति आई है, उनको हम सलाम करते हैं। ये एक प्रकार का सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, पर किस चीज़ का है? कहीं राम या रहीम का नहीं है। ये उत्सव है हमारी एकता का, हमारी हिम्मत का और हमारी विजन यानी हमारे सपनों का। आज इसलिए ये वर्ल्ड सोशल फोरम यानी वसुधैव कुटुंबकम का ही सपना लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और हम सब लोग, कल वैलेंटाइंस डे था, इसलिए इस नेपाल की भूमि पर पधारे। तो आई लव नेपाल, आई लव हिमालय, आई लव काठमांडू, आई लव वर्ल्ड सोशल फोरम, यही कहकर इसमें शामिल हुए। हम लोग ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में नहीं हैं, हम लोग इंटरनेशनलिज्म के पक्ष में हैं। अपन जागतिकीकरण यानी वैश्वीकरण यानी पूंजी और बाजार का व्यापार नहीं मानते। हम मानते हैं न केवल पड़ोसी पर हर अपने अपनी संप्रभुता के साथ चलने वाले, अपनी संस्कृति अपनी प्रकृति बचाने वाले एक एक राष्ट्र को स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए नेपाल और भारत की एकता एक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार के चैलेंजेस, आह्वान हमारे सामने है, जो कई सारे वक्ताओं ने यहाँ रखे। सबसे बड़ा आह्वान है हिंसा का। इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई जो हमारे दिल के ऊपर बुलडोजर चलाती है, उसकी तो सबने बात की है। हम क्या सत्ताहीन हैं, हम क्या निराश है कि हम उसको नहीं रोक सकते। हमारा दिल तो दहलाता है, पर अगर इतने सारे लोग जिनके साथ हजारों हजारों लाखों लोग हैं, उसमें दलित है, आदिवासी है, महिला है, हमारे दिव्यांग लोग यहाँ आए हैं और नृत्य तक यहाँ पेश कर चुके हैं। कौन नहीं है यहाँ? आदिवासी, इंडिजिनस कम्युनिटीज है, फार्मर्स है, किसान है, मजदूर है। तो हम सब लोग अगर पैलेस्टाइन के और गाजा पट्टी के साथ है, तो हम सब लोग हिंसा के विरोध में हैं। हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। आज तथागत बुद्ध को याद करते हुए इस नेपाल की भूमि पर हम लोग अहिंसा को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। और ये हिंसा किस किस नाम से हुई है? केवल दो राष्ट्रों के बीच की हिंसा नहीं चल रही है, यहाँ एक एक प्रकार का राष्ट्र के अंदर आंतरिक युद्ध भी चल रहा है। भारत से आई हूं
तो भारत की स्थिति यहाँ रखते में रात गुजर जाएगी, रात गुजर जाएगी। लेकिन आज जहाँ राम राज्य नहीं आया है और जहाँ जाति धर्म के नाम पर एक एक हमले हो रहे हैं, न केवल गुजरात में जहाँ बड़ा दंगा, अब नहीं छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल मध्य प्रदेश में, हर गांव और गली में हिंसा की घुसपैठ हो रही है और वो की जा रही है। इस प्रकार की हिंसा जो मानवीयता के विरोध में है, जो जीवन के विरोध में है, हम लोग अगर नहीं मानते हैं तो हम नई दुनिया अहिंसा और सत्याग्रही मार्ग से ही बसा सकते हैं। यही हमारा संकल्प इस फोरम से जाहिर होना चाहिए। हम देखते हैं कि हिंसा विकास के नाम पर भी हो रही है। किस प्रकार का विकास जो कि उद्ध्वस्त कर रहा है न केवल हिमालय को, न केवल उत्तराखंड को, न केवल कोसी को, पर नर्मदा को भी। किस प्रकार का विकास जो निसर्ग प्रकृति निर्भर समुदायों की जमीन, जंगल, जल, नदियां, खनिज सब कुछ खींच लेता है। और खनिज लेने के लिए तो मणिपुर में हिंसा होती है। वो कुकी विरुद्ध मैती की लड़ाई नहीं है, वो कुकीज की जमीन के नीचे की खनिज संपदा पर जिन गीधों की नजर है, जिनके साथ 2017 से एमओयूज हो गए हैं, उनको ही वो खनिज हिंसा का मुद्दा बनाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि विकास के नाम पर किस प्रकार का हमला हो रहा है। दलितों का चरागाह छीना जाता है, आदिवासियों का जंगल खत्म किया जाता है, और नदियां अविरल बहने नहीं दी जाती है, न निर्मल बह सकती है। आज कोसी की लड़ाई नेपाल विरुद्ध भारत की लड़ाई नहीं है। कोसी की लड़ाई विकास विरुद्ध विनाश की लड़ाई है। और इसीलिए हम सब लोग एकता के साथ एक एक नदी को, जंगल को, जमीन को बचाने की अगर बात सोचते हैं तो कितने सारे क्लाइमेट जस्टिस, जलवायु परिवर्तन के सामने न्याय के प्रति कटिबद्ध लोगों के सेमिनार्स और चर्चा संगोष्ठियां कल से चालू होने वाली है। हमारा तो ऐलान है कि सब लोग एकत्रित आए, और जो जलवायु परिवर्तन आया है वो विकास की गलत अवधारणा के साथ कारण आया है। टेक्नोलॉजी, तकनीक जरूर जरूरी है, पर तकनीक किसमें नहीं होती है। भोजन खिलाने वाले भी महिला तकनीक का इस्तेमाल करती है। जो आपके अन्नदाता है, किसान, मजदूर, जो हर प्रकार के प्रोड्यूसर से निर्माण करता है, वो क्यों संघर्ष करने के लिए आज मजबूर किए जा रहे हैं, ये सोचिए। ये तकनीक की चॉइस, टेक्नोलॉजिकल चॉइस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है तो ये हिंसक और हिंसक ही होने वाली है, और आज भी है। और इसीलिए हम लोगों को विकास की अवधारणा को बदलना है। तो हम लोगों को विकेंद्रीकरण, लोकसभा में नहीं, ग्राम सभा में विकास का नियोजन, यही हमारा नारा नहीं, संकल्प होना जरूरी है। हम अगर जल का नियोजन करना चाहते हैं तो कोसी हो कि नर्मदा हो, बड़े बड़े बांध बनाना, तटबंध उनसे नदी को बांध देना, और फिर तटबंध टूटने से कुसहा त्रासदी से लाखों लोगों का ध्वस्त होना, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नदियों को तो बहते रहने दो, पर जंगल जिनके बिना ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये हरे वेंटिलेटर्स है, ये अगर नहीं होंगे तो कोरोना क्या, एक एक वायरस से जीवन ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन आज हम बिल गेट्स फाउंडेशन से नहीं चाहते हैं कि कोरोना के बारे में आप बोले और आप कोरोना से उपाय सुझाए। वो तो 42,000 एकड़ के अमेरिकन जमींदार हैं। हम वर्ल्ड बैंक और IMF, G20 फोरम पर आए हुए सभी बायलैटरल द्विराष्ट्रीय संस्था और साहूकार, इनसे कुछ सलाह नहीं चाहते हैं। ये हमारे मेंटर्स नहीं है। इनसे अधिक पूंजी लेकर हम क्लाइमेट चेंज से जीवन बचा नहीं सकते हैं। हमको देखना चाहिए आदिवासियों की तरफ, जो मूल निवासी है,
जिनकी सादगी और स्वावलंबन की जिंदगी है, संस्कृति है, जिन्होंने कभी भी नदियों का पानी बोतल में भरकर बेचा नहीं है, जिन्होंने मछली भी मारी है तो भी पीढ़ियों तक जीवित रखी है। आज समुंदर किनारे के मछुआरे हो कि नदी के किनारे के, हमारे पशुपालक कैटल ग्रेजर्स हो कि फार्मर्स, सभी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय दूर करके उन्होंने ही जो सिखाया है, जीवन और जीवटता का एक प्रकार का संदेश दिया है, उस संदेश को ही इस विश्व सोशल फोरम से हम लोगों को समाज के गांव गली में, शहर के बस्ती बस्ती में पहुंचाना है। क्या मंजूर है सबको? क्या मंजूर है? तो आज ये फोरम तो नेपाल की सरकार ने होने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। भारत में शायद ही होने देते। आज इस फोरम को सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने बधाई दी और समर्थन जाहिर किया, हम उनको भी सलाम करते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस में भी कॉरपोरेट्स घुसते हैं तो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एक प्रस्ताव, ठहराव, कॉवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस कैसे अमल में आएंगे, जिसमें लिखा है कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को बचाना है। वो अधिकार तभी बचेगा जब हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि एक एक ध्वस्त हो रहा है, हिमालय का, उत्तराखंड का खंड खंड हो रहा है, जोशीमठ धंस रहा है, हिमालय का बर्फ पिघल के आ रहा है, नदियों का पानी बाष्पीभवन होके उड़ जा रहा है। कैसे बचेगी ये प्रकृति जिसके बिना जीना संभव नहीं है? वो ही बचा सकते हैं जो आज अपने संगठनों की जनशक्ति है, और जनशक्ति के सिवाय जन आंदोलन नहीं चल सकता, और जन आंदोलन के सिवाय नई दुनिया, परिवर्तन नहीं आ सकता है। ये हमारा सबका मानना है। क्योंकि आज कॉर्पोरेटाइजेशन, कंपनीकरण, जो शिक्षा में घुसपैठ करके शिक्षा नीति को बदल रहा है, जो स्वास्थ्य में घुसपैठ करके लोग मृत मौत के कगार पर ढकेले जा रहे हैं, लेकिन उनको संभव नहीं है स्वास्थ्य का अधिकार भी लेना। ऐसा कॉर्पोरेटीकरण, ऐसा कंपनीकरण जिससे गौतम अडानी जैसे एक कॉर्पोरेट एक दिन में 1600 करोड़, he earns every day 1600 crores, और हमारे मजदूर मनरेगा यूनियन के साथी भी आए हैं, वो दिन में 600 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं। इस प्रकार की बीभत्स गैर बराबरी, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान, ये महात्मा फुले ने दिया हुआ संदेश, ये महात्मा गांधी जी का स्वराज्य का नारा सब के खिलाफ है। और इसीलिए संविधान पर हाथ रखकर भाग जाते हैं जनप्रतिनिधि। तो हम ही को करना चाहिए जनता का प्रतिनिधित्व, जो आज भोजन, पानी, रोजगार, आवास सबके लिए हैरान है, जो आज जूझ रहे हैं अपना हर जीने का अधिकार लेने के लिए, जो आज रोजगार के लिए आत्महत्या कर रहे युवा और किसान, जिनको कि घाटे का सौदा भुगतने के कारण हर रोज कम से कम 50 किसान इंडिया में, भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब आत्महत्याएं नहीं है, ये हत्याएं हैं जो आज की गैर बराबरी के आधार पर समता और न्याय के विरोध में जो अर्थव्यवस्था दुनिया में चल रही है, उसी के कारण ये हत्याएं हो रही है। इनको अपराधी साबित करना चाहिए और समता और न्याय के साथ लड़ना चाहिए। आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड सोशल फोरम जैसा फोरम, जब यहाँ इतनी विविधता यहाँ मौजूद है, तो ये गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना भी हमें संभव है। ये केवल ब्यूटी नहीं है, ये बाउंटी है। और ये इस प्रकार के अलग अलग विचार लेकर एक साथ आए हुए, एक मंच पर पधारे हुए लोगों से हमें बहुत बहुत अपेक्षा है। हमें अपेक्षा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हर प्रस्ताव, हर ठराव, जो हर आदिवासी को ही नहीं, हर इंसान को, नागरिक को अधिकार देने वाला है, उसका ही हम लोग संभल अमल करवाए। और वर्ल्ड सोशल फोरम से
संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल से इसके लिए अगुवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। फिर से मुस्लिमों को धर्म के नाम पर नागरिकता निकालने की साजिश भारत जैसे देश में होती है तो हमारी शाहीनें जो आसमान में उड़ती थी, शाहीन बाग जब चलती थी, उनको फिर से रास्ते पर उतरने के सिवाय, हम महिला शक्ति के आधार पर उनको साथ देने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि सत्ता और जनता के बीच का संघर्ष वही तो होती है सही जननीति और राजनीति। केवल वोटिंग करना ईवीएम के द्वारा या बैलेट पेपर के द्वारा भी वो राजनीति सही नहीं है। आज हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ उड़ जाते हैं, खोके बॉक्सेस पैसे से भर के लेते हैं। तो हम लोग आज एक नई राजनीति, नई अर्थनीति और नई मानवीयता का एहसास लेकर यहाँ पधारे हैं साथियों। तो हम सब लोग निश्चित जहाँ जहाँ विवाद है हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। अगर बॉर्डर पर नेपाल और भारत के कोई विवाद है, हम नेपाल और भारत के लोग एकत्रित आकर आज हाथ से हाथ मिलाओ, दुनिया को सुंदर बनाओ, यही कहते हुए सॉलिडारिटी रैली में चले हैं। हमको जरूरी है कि इस प्रकार का संवाद को आगे बढ़ाना और जहाँ जहाँ विवाद है उसको छुड़वाना। और ये G20 जैसे फोरम से नहीं हो सकता है। वहां तो पूंजी की लेन देन क्या हुई, क्या परियोजना बनी, क्या प्लानिंग हुआ, कोई जानते नहीं है। ये जनतंत्र की खिलाफत है, ये जनतांत्रिक प्रक्रिया को हैरान कर रहे हैं। आज भारत जैसे देश में संसद से बाहर करते हैं सांसदों को और फिर कानून बदलते हैं। ये वर्ल्ड बैंक से लेकर जो पूंजीवादी है, जो इंडियन मल्टीनेशनल्स भी है और ग्लोबल मल्टीनेशनल्स भी है, जो ग्लोबल कैपिटल फ्लो यहाँ लाते हैं, वो ऐसा प्रभाव दबाव डालकर कानून बदलते हैं कि अब जंगल, फॉरेस्ट किसी को भी दे सकते हैं। लोगों को, आदिवासियों को भी पूछने की जरूरत नहीं है। जो किसान विरोधी कानून लाते हैं, तो हमारा किसान आंदोलन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर को झुकाता है, 3 कानून वापस करवाता है। पर श्रमिकों के कानून ये बदल देते हैं और कमजोर कानून लाकर ट्रेड यूनियन को, श्रमिक संगठनों को भी लड़ने का अवकाश खत्म करते हैं। हम ये मंजूर नहीं है। जन आंदोलन हमारा अधिकार है और हम आंदोलन जीवी है, केवल आंदोलनकारी नहीं है। और इसीलिए हम यही अपेक्षा करते हैं कि टैक्स प्रणाली बदल रही है। टैक्स, अगर वेल्थ टैक्स भी 2% लगाए भारत में तो भी 7.5 लाख करोड़ आएगा हर साल सरकारी तिजोरी में। तो शिक्षा मुफ्त हो जाएगी, स्वास्थ्य मुफ्त हो सकेगा और भरसाई का इनहेरिटेंस टैक्स भी लगाते हैं केवल 1% अब्जा देशों पर, सबसे धनिकों पर, तो भी 9.5 लाख करोड़ रुपया आएगा। टैक्स प्रणाली बदल दो, गैर बराबरी खत्म करो, नदियों को अविरल बहने दो, जल जंगल जमीन बचाओ, दलित, आदिवासी, श्रमिक सभी की एकता को सम्मान करो। तो हम बस यही कहेंगे कि हम इस फोरम से जब लौटेंगे तब हम लोग कॉन्फिडेंस, करेज और कमिटमेंट, आत्मविश्वास, हिम्मत, कई सारे जेल में हैं सामाजिक कार्यकर्ता और कई सारों को लाइन में, कतार में खड़ा किया है। हम क्या डरते हैं? न डरेंगे, न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग इस हिम्मत के साथ और एक प्रकार की कटिबद्धता के साथ जाएंगे। अगेंस्ट किसके लड़ेंगे? कम्युनलिज्म, कॉर्पोरेटाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन। हम लोग लड़ेंगे सांप्रदायिकता के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ, हम लड़ेंगे कंपनीकरण के खिलाफ, हम लड़ेंगे जलवायु परिवर्तन और प्रकृति विनाश के खिलाफ, हम लड़ेंगे हर प्रकार की लूट, जो भी हिंसा है उसके खिलाफ। बस तो हमारे शहरी गरीबों की कल बस्ती तोड़ी गई है, पर हम लोग वहाँ भी जो गीत गाते हैं, मैं 2 लाइन में सुनाऊंगी, क्योंकि हम दूसरी दुनिया नहीं, हम नई दुनिया बनाना चाहते हैं। तो धनवानों के राजमहल ये,
गरीब के है फांसी घर, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर। गरीब के क्या प्राण नहीं है, गरीब क्या इंसान नहीं है, गरीब जीते मर मर कर, चलो बसाए नया नगर हम, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर। हमको गाजा पट्टी भी बचानी है और हर बस्ती भी बचानी है, हमारा अपना अधिकार बचाना है। तो लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़े हैं जीते हैं, लड़ रहे हैं जीत रहे हैं। जिंदाबाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। फोरम कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ र त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग साङ्केतिक भाषा दोभाषीहरू हुनुहुन्छ, दिपाजी, कृष्णप्यारी नकर्मीजी, नानु श्रेष्ठजी, पूजा रेग्मीजी र पदम केसरी प्रधानाङ्गजी, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म लियो गाब्रियललाई आफ्नो कुरा राख्नलाई अनुरोध गर्छु। Compañeras y compañeros, dear friends, liebe Freunde und Freundinnen, Sati de Nepal. I'm here already for the 15th time in a World Social Forum. The first World Social Forum we had in 2021, it was in 2001. We called for people, we didn't know how many, perhaps a few, perhaps a few hundred, and there were thousands and thousands of people who were coming together. You know, this is this event which creates a certain consciousness. And there are people who are saying, oh, they just talk. Yes, we talked. And we had a result of this talk. I remember very much that in the first social forum, there was an alternative to capitalism presented by the Brazilians, which is called economy of solidarity. A little later, there was this overwhelming war in Afghanistan and then in Iraq. And we called, and there were 30, 40 million people around the globe mobilized themselves against this war in Iraq. And what we need is such a mobilization again. But there is one problem. How do you do it all around the world? You can only do it if there is a deliberate decision of the people, of the peoples, of the friends in all over the world to choose one day, one beginning. That's why, for the first time in the history of the World Social Forum, here we will try out a new form, the form of an assembly which can have the power to speak out to those who are outside our ideas. An assembly where the different movements which do such a beautiful work, you know, the ecology movements with the glacier,
the peace movement, the women's movement, the human rights movement. Many of them are here present. They come together to form one movement because it is necessary to go from talk to action. And I think we have the capacity to do that. Perhaps not in the first assembly, which is going to take place here from the 18th of February from 3:30 to 5:30 here in the spaces of the World Social Forum. But it would be a start, and it wouldn't be the first time in my life that I was present at the start. Take care. And then the action followed, the transformation followed, which is so necessary these days. Thank you very much. Thank you very, very much. हैन हामीले कुरो मात्रै गरेर हुँदैन. लक्ष्मण बस्नेत जुन चाहिँ ट्रेड युनियनमा हाम्रो पुरानो नाम हो, माइग्रेसनमा पुरानो नाम हो. लक्ष्मण दाइलाई म आफ्नो कुराहरू राख्दै हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. Now I would like to request Mr. Lakshman Basnet, who is a trade union activist and who is chairing of today's session, to come deliver his speech and then end the session. Lakshman Dai, please, you are welcome. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म आज अत्यन्त प्रसन्न छु किनभने विश्वको यत्रो ठुलो मञ्चमा नेपालको युनियनको एउटा प्रतिनिधिले अध्यक्षता गर्न पायो र आफ्ना कुराहरू केही राख्न पाएको छ. त्यसका लागि म मेरो नेपालको सबै ट्रेड युनियनहरू र आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. आज यहाँ जुन कुरा भयो त्यसको बारेमा पनि म केही भन्न चाहन्छु. आज यहाँ विभिन्न किसिमका समूहहरू आएर, महिला समूह, आदिवासी समूह, जनजाति समूह, डिफरेन्टली एबल बडिड समूह, त्यस्तो मजदुर, किसान, सबैको एउटा कमन कुरा छ. त्यो उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जुन अन्याय भोगिराखेका छन् त्यो कुरा आफ्नो यत्रो पसलहरूमा हाँस्दै केही कुरा बेच्दै उनीहरूले आफ्नो कुरा अन्यायको कुराहरू बताइराखेको छ. चाहे त्यो म्युजिकबाट होस्, चाहे त्यो गीतबाट होस्, चाहे त्यो अरू भावात्मक कुराहरूबाट पनि होस्, त्यो सबै उनीहरूले बताइराखेको छ. What I want to say, the gathering here today is explaining what kind of injustice they are facing in their countries, in their society. They are explaining it to that. त्यसको पर्पस के हो? त्यसको पर्पस के हो भने हामीले त्यो अन्यायलाई हटाउनको लागि, त्यो शोषणलाई हटाउनको लागि एक बद्ध हुनुपर्दछ र एउटा गोललाई लिएर, न्यायको लागि सबै मिलेर, हाम्रो आफ्नो आफ्नो न्यायको लागि सबैले मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने त्यसको सङ्घर्ष, त्यसको अन्तिम उद्देश्य हो. र त्यो कुनै हिंसात्मक सङ्घर्षको कुरा गरेको होइन, कुनै शस्त्रको सङ्घर्ष गर्ने भनेको होइन, आइडियाजको, विचारको सङ्घर्ष हो. त्यो सङ्घर्ष, यो जुन विश्व अहिले एकतर्फ ढल्किएको छ, चाहे आर्थिक रूपमा होस्, चाहे त्यो
सामाजिक रूपमा होस्, जुन किसिमको भेदभाव भइरहेको छ त्यो सबै कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनको लागि हामीले एउटा नारा दिएको छौँ, अदर वर्ल्ड इज पोसिबल, अर्को संसार सम्भव छ। त्यसको लागि हामी आज यहाँ लड्नु पर्दछ। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक न्यायपूर्ण सरकार के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए हम लोग सब मिलके यहाँ लड़ने आए हैं, चाहे वो भारत से आए हों, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे श्रीलंका से आए हों और विश्व के अदर और दूसरे जगह से आए हैं। एक ही उद्देश्य लेकर आए हैं। हमारी नदियाँ सूख रही है, हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, हमारी ये नदियों में मछली नहीं है, अब प्लास्टिक का बोतल बहने लगा है। हमारे समुद्र में अब से 20 वर्ष पहले बाद में 2050 में हमारे समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक के बोतल होंगे। ये सब चीज आपको ध्यान देना है। मैं नेपाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से। हमने अपने जंगल बेच दिए, हमने अपने पानी बेच दिया, अब हम लोग अपने मनुष्य बेच रहे हैं। जहां अभी आज नेपाल में आप कहीं भी जाके देखिए, चाहे तराई के गांव में हो चाहे पहाड़ के गांव में, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। सब जवान लोग चले गए, काम करने चले गए, सिर्फ बूढ़े और बच्चे रहते हैं। ग्रैंडफादर दादाजी नाती को देख रहे हैं, वहां लाश उठाने के लिए लोग नहीं है। इस अवस्था में हमें अपने इस संसार को मनुष्य के लिए बनाना है, न कि संपत्ति के लिए बनाना है। यहाँ जो हो रहा है वो जीडीपी के लिए हो रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। आज हम यहाँ से जीसीसी कंट्रीज मलेशिया और रूस में लोगों को भेज रहे हैं। हम खुशी इसलिए हैं कि वहां से रेमिटेंस आ रहा है, बहुत 17 अरब रुपया वहां से आ रहा है। लेकिन कितने गांव उजड़ रहे हैं, कितने लोग बक्से में आ रहे हैं। ये नेपाल में मात्र नहीं, हिंदुस्तान में बक्से में आ रहे हैं। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा, पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।